अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, तवक्को के ऐन मुताबिक पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है। तवक्को के ऐन मुताबिक सबसे जारहाना और जानदार मौक़िफ़ पाकिस्तान ने ही पेश किया। फलस्तीनियों का मुकदमा जिस तरह पाकिस्तान ने लड़ा है, ऐसे दुनिया का कोई मुल्क नहीं लड़ पाया। पाकिस्तान के मुतहर्रिक किरदार की दुनिया मोतरिफ है। पाकिस्तान ने एक दफा फिर 1947 की वो याद ताज़ा करवा दी जब पाकिस्तानी वजीर खारजा सर जफरुल्लाह ने 28 नवंबर 1947 को अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फलस्तीन पे जारहाना खिताब किया था, जिसे उस वक्त का बेहतरीन खिताब करार दिया गया था। एक दफा फिर पाकिस्तान ने तारीख दोहरा दी है। शाह महमूद कुरैशी ने इसराइल के खिलाफ जंगी मुकदमा दर्ज करने और फलस्तीनियों की हिफाजत के लिए इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स का मुतालबा करके इसराइल को बैकफुट पे ला खड़ा किया, जिसके बाद शेख जरा को खाली करना इसके लिए मुमकिन ही नहीं रहा। पाकिस्तानी वजीर खारजा ने अपने खिताब में वेस्टर्न वर्ल्ड को तमाचा मारते हुए कहा कि दुनिया के लोग अमूमन, जबकि पाकिस्तानी खसूसन अक़वाम मुत्तहिदा के शर्मनाक किरदार से सख्त मायूस हुए हैं। इनफ इज इनफ। आपका ताल्लुक जिस भी सियासी या मजहबी जमात से हो, आज शाह महमूद कुरैशी शाबाशी के हकदार हैं। पाकिस्तानी वजीर खारजा ने यूएन में खड़े होकर सलामती कौंसिल को धोखेबाज कहा, अमेरिका को जानबदार कहा, मगरबी ममालिक के इत्तेहाद को गैर मौसर कहा और इसराइल को दहशतगर्द मुल्क कहा। आज पाकिस्तान और तुर्की ने आलमी दुनिया के सामने इसराइल की जो तबाही फेरी है, 70 साल तारीख में किसी ने नहीं की। मजबूरन इसराइली सफीर को यूएन का इजलास छोड़कर जाना पड़ा। शाह महमूद कुरैशी का फलस्तीन में फौज भेजने का अंदिया और तुर्की की इसराइल की माशी और सफारती बाइकाट की धमकी, वो भी सरेआम दुनिया के सामने एक रिकॉर्ड बन गया है। ऐसा पहली दफा हुआ कि पाकिस्तान और तुर्की के बेखौफ और निडर मौकफ ने मगरबी कुव्वतों को हिला दिया और माहौल इतना गंभीर हुआ कि इसराइली सफीर यूएन का इजलास छोड़कर जाने पर मजबूर हो गया। इसराइली सफीर की तमाम तर तैयारियां और दलीलें बेसूद हो गईं। अल्लाह ने ये एजाज पाकिस्तान और तुर्की को अता किया। आप माने या ना माने, पर दुनिया ने आज इसराइल पर मुस्लिम उम्मा के मौकफ को मान लिया। इसराइली बयानिए की सबसे बड़ी और तारीखी शिकस्त हुई, यहाँ तक कि इसराइल ने गैर मशरू जंग बंदी का ऐलान कर दिया। हद तो ये है कि अपने इंटरव्यू में इन्होंने अमरीकी मीडिया को इसराइल और यहूदियों का आलाकार करार दिया, जिसके बाद अमरीकी मीडिया में एक आग लग गई, क्योंकि इतनी गहरी चोट शायद ही इन्हें कभी पहुंची हो। दुनिया भर में अमेरिका और इसके मीडिया के मुजरिमाना किरदार को बेनकाब करने पे बिलाशुबा पाकिस्तान खराजे तहसीन का मुस्तहिक है। बाखुदा कुरैशी साहब ने इनकी बेड़ी में पहला पत्थर रख दिया है। इनके तो वहमो गुमान में भी नहीं होगा कि कोई इनका ऐसे भी मुंह तोड़ सकता है। बड़े बुजुर्गों से कहते सुना था कि पाकिस्तान से अल्लाह ने बड़ा काम लेना है, और आज ये सच होता महसूस हो रहा है। दुनिया तो इनकी तरफ आंख उठाकर देखने की जुर्रत नहीं किया करती थी, और हमने इन्हीं के घर में इन्हीं के चैनल पर बैठकर इनको दुनिया के सामने नंगा कर दिया है। इनकी बुलंद होती हुई चीखें बता रही हैं कि निशाना बिल्कुल ठीक जगह पर लगा है। वल्लाह यही वक्त है कि सब मिलकर अपने हिस्से का एक एक पत्थर इनकी बेड़ी में डालते जाएं और बीच दरिया में इनके डूबने का नजारा देखें। शाह महमूद कुरैशी ने घोरी एंकर को जिस तरह लताड़ा, और इस पे इस बेचारी की बुखलाहट देखने लायक है। जरा कुरैशी साहब का अंदाज और गहरी चोट मुलाहजा कीजिए। Foreign Minister joins me now from New York. Mr. Minister, thank you so much for joining us. It has been a very busy day. From your end, do you hear any talks about a possible ceasefire coming anytime soon? I am convinced the tide is turning. I am convinced the pressure of public opinion is mounting, and ceasefire is inevitable. Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. I mean, they control media. I mean, I would call that an anti-Semitic remark. Well, you see, the point is, they have a lot of influence, and they get a lot of coverage. Now, what has balanced that is the citizen journalist who has been reporting, sharing video clips, and that has jolted people, and that has woken up people, and people who were sitting on the fence are today speaking up. Do you see how in different capitals of the world, in London, in Madrid, in Michigan, Chicago, every place from Sydney to the European capitals, people have come out and saying, put an end to this insanity. They're calling for an immediate ceasefire. Now, the Security Council has failed in forging a joint statement and coming out with a joint statement and forging a consensus. The General Assembly today
is giving a clear message to the Security Council. It is your prime responsibility to ensure peace and security. Please live up to the UN Charter. But Mr. Ambassador, can we not separate the fact that there are calls for peace and for equal human rights for both sides, for Palestinians and for Israelis, without anti-Semitic talk and rhetoric? And we are seeing an increase in anti-Semitism throughout the world. Many of these protests are showing signs and images of anti-Semitism as well. Shouldn't you be condemning that? I will not justify any rocket attacks, and I cannot justify and I cannot condone the aerial bombardment that is taking place. But what about anti-Semitism? And what about Hamas's role in stopping the rockets? I am saying when you do not engage, when there are no negotiations, when there is occupation, when there's genocide, when there's war crime, when there's ethnic cleansing, then an extremist element takes advantage of that situation. Avoid it. How do you avoid it? You avoid it by pursuing a two-state solution, by adhering to the Security Council resolutions, respecting them, implementing them, fulfilling the promises that have been made and have been often broken. So, I believe that the answer is Israelis and Palestinians living side by side in peace, and it can only be done through a two-state solution, through negotiations, by cessation of hostilities, and a ceasefire is the first step in that direction. Does that include condemning anti-Semitism and condemning statements? I am not justifying any of that. You began this conversation. I am so sorry. There are so many things I want to talk to you about, but I personally am offended as a journalist. You began this conversation by saying that suggesting that Israel has, quote, close friends and powerful friends in the media. That is an anti-Semitic trope. No. What I'm saying is the perception. Look at the perception the world has. You cannot ignore that, ma'am. But that's a wrong perception. Would be wrong, but that's the perception. Negate it. Well, negate it. By giving a balanced coverage, negate it. The onus is not on those who are being accused of things that aren't true. It's on people like you in powerful positions to say that that's wrong. Well, what we are saying, what is wrong, and I'm not shying away from that. What I'm saying is, this insanity must come to an end. We must promote dialogue. We must sit and talk, and we must promote peace. Israelis and Palestinians, everybody has a right to live. They have a right to protect their children. Look at what's happening. 230 innocent people have been killed. More than 50,000 people have been displaced. इस बयान के बाद मगरबी मीडिया की मां मर गई है। रात से वावेला मचा रहे हैं। अब तो CNN वाले भी पछता रहे हैं शाह महमूद कुरैशी को इंटरव्यू के लिए बुलाकर, जिसने इन्हीं को एक्सपोज करके रख दिया। कहने लगी मिस्टर एम्बेसडर। शाह जी बोले ओ अन्नी दिए मैं एम्बेसडर नहीं फॉरेन मिनिस्टर हूँ। सबसे मजे की चीज कहका लगाकर डीप पॉकेट्स वाला शोशा छोड़ना था। डीप पॉकेट्स जर्नलिज्म का अवामी तर्जमा लफाफा जर्नलिज्म। गल बहुत बद गई है। अब पटवारी शाह जी के कहके पे एतराज कर रहे हैं कि इस रवैये पे हमारी गोरी मेम का मुंह लटक गया था। पटवारियों को बताती चलूं कि एंकर का मुंह देखकर मेरा भी हासा निकल गया था। पटवारियों शाह जी पे चिल्लाने के लिए तुम्हारे गोरे बहुत हैं, तुम क्यों हलकान हो रहे हो। वैसे पटवारियों के पेट में उठते मड़ोड़ के लिए हस्बे मामूल फक्की का भी बंदोबस्त किया है। आइए एक मवाजना करते हैं। पहले असद उमर ने दुनिया के सख्त तरीन शो हार्ड टॉक पे बैठकर एंकर को फक्की दी और कहा कि हमें मशवरे देने की बजाय वेस्टर्न वर्ल्ड अपने गिरेबान में झांको और शर्म महसूस करो, एडे तुसी रहंदे नहीं। फिर इमरान खान अमेरिका गया तो इन्हीं की सरजमीन पर बैठकर इन्हीं की पॉलिसियों के पैंतरे निकाले, इन्हीं के मीडिया पे लॉजिकल वार करते हुए 30 साल बयानिए के बकिए हदेर दिए। अभी ये जख्म बरे नहीं थे कि शाह महमूद कुरैशी ने अमेरिका के सबसे बड़े मीडिया टाइकोन को इसी चैनल में बैठकर ऐसा धोया कि दुनिया भर में इसका चेहरा मस कर दिया। शाह जी ने कहका लगाकर डीप पॉकेट्स कहकर वो चेहरा लगाया जिसने सालों की मेहनत पे मिनटों में पानी फेर दिया और ये जख्म अब दहाइयों तक रसता रहेगा। वैसे जिस हार्ड टॉक पे असद उमर ने इनको लतारा था, उसी हार्ड टॉक ने नून लीग के मुंशी इसहाक डार को ऐसे धोया कि नस्लें याद रखें। जिस अमेरिका में बैठकर इमरान खान ने इनकी पॉलिसियों
के परखचे उड़ाए, उस अमेरिका के एयरपोर्ट पे नून लीगी पपिट वजीर आजम खाकान अब्बासी की पैंट उतारी गई। जिस CNN पे कुरैशी हमलावर हुआ वहाँ मियाँ साहब को सर्फ एक्सल से धोया गया और वो पर्ची ढूंढता रह गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि मौजूदा क़यादत ने ना तो नाई मोची के इकामे रखे हैं और ना करप्ट है कि इसे किसी का डर हो। अब डू मोर का जवाब नो मोर आता है। अब वो डर नहीं रहा कि करप्शन करके किस मुल्क में भागकर पनाह लेंगे और किस मुल्क में पैसे छुपाएंगे, कहाँ फ्लैट बनाने हैं, कौन पनाह देगा। अब यूरोप के मुकाबले में एक आजाद खारजा पॉलिसी तश्कील दी जा चुकी है। अब पाकिस्तान का मुकदमा जारहाना मूड में लड़ा जाता है। अब कोई पाकिस्तान को साइड नहीं करवा सकता क्योंकि अब क़यादत शफाफ और बाहिम्मत है। एक तरफ कुछ अरब रियासतें हैं जो इसराइल के पपिट बने हुए हैं, तो दूसरी जानिब दुनिया भर में लोग मजहब से बालातर होकर इसराइली बर्बरियत के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। हर अहम मौका पे बुर्ज खलीफा को लाइट करने वाला मुत्तहिदा अरब अमारात और फलस्तीन को बोल गया, लेकिन खुद इंसानियत पसंद यहूदी इस बर्बरियत के खिलाफ उठ गए हैं। गूगल में काम करने वाले 250 से ज्यादा यहूदियों ने गूगल CEO को खत लिखा है कि इजरायली फौज और इसकी किसी भी कंपनी से कोई मुआहिदा है तो फौरन खत्म करें और इसराइल का बॉयकॉट करें। इसराइल को पहली दफा इस शिद्दत से अवामी मज़ाहमत का सामना करना पड़ा है। इसके लिए मुस्लिम मीडिया और मुस्लिम ममालिक के चंद सरबराहान खसूसन पाकिस्तान और तुर्की की खसूसी काविशें तारीख में दर्ज हो चुकी हैं, जिन्होंने न सिर्फ अमेरिकी मीडिया को बेनकाब किया बल्कि अवामी राय आमा हमवार करने के लिए मुसलसल काविशें की और दुनिया को मसले की संजीदगी से आगाह किया। अक़वाम मुत्तहिदा में 3 बार इजलास मुनक्किद करवा के पाकिस्तान ने बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया। अगरचे अमेरिका ने इसे तीनों बार वीटो किया, लेकिन इस अमल ने भी अवामी राय आमा हमवार में मुस्बत किरदार अदा किया। अमरीकी सदर की काल के बावजूद इसराइल ने मिशन मुकम्मल होने तक ऑपरेशन न रोकने की बात कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इसराइल के खिलाफ जंगी मुकदमा दर्ज करने और इंटरनेशनल प्रोटेक्शन फोर्स के मुतालबे ने माहौल ही बदल दिया। पाकिस्तान OIC के इजलास में किसी भी हद तक जाने की बात कर चुका था, लिहाजा पहले फेज में OIC और अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए आलमी प्रेशर और राय आमा हमवार करने के अमल ने ही काम कर दिखाया। आज इसराइल तारीख की कमजोर तरीन पोजीशन में आ चुका है। अगर दीगर ममालिक पाकिस्तान का साथ देते हैं तो इसे कटहरे में खड़ा करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान ने तारीख रकम कर दी है। अल्हम्दुलिल्लाह बयानी की जंग में पाकिस्तान पिछले 2.5 साल से हर मौका पे मुखालफिन को मात देता आ रहा है। इसराइली काबीना का हंगामी इजलास हुआ जिसमें इसराइल ने जंगबंदी का ऐलान कर दिया और जंगबंदी की हिमायत की। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।